Hello, sir. Good morning.
What is Hi. Hello. Hello, everyone. Hello, everyone.
सब कुछ लिखा हुआ है तो बोलना पड़ेगा तो मैं प्रिंट ले लेते हैं ना इसका सिस्टम लेके बैठो हाँ मेल कर देते
Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Am I audible, everyone? Yes, ma'am, you're audible. Okay. Good morning, everyone. Uh, a very good morning to our respected Principal Secretary and Member Secretary of Department of Environment, our distinguished speakers, and all our dear students. Today we are here to celebrate the most important day, World Water Day. World Water Day is an international day of celebration. It is meant to encourage the people around the world to learn more about water-related problems and to take action to make a difference. It was first formally included the timetable 21st of the year 1992, United Nations Conference on Environment and Development in Rio de Janeiro, Brazil, and festivity was begun in year 1990 to persuade the overall population to get their help in water preservation by evading the utilization of their taps for the entire day. Since then, World Water Day is being celebrated on 22nd March every year. This year, the theme of World Water Day is groundwater, making the invisible visible. The World Water Day celebrates water and raises the awareness of global water crisis, and the core focus of the observance is to support the achievement of Sustainable Development Goal 6, that is water and sanitation for all by 2030. So, to celebrate this year World Water Day, we have a panelist of 4 distinguished speakers amongst us, and our Principal Secretary and Member Secretary, we have also joined. I now request Principal Secretary to address the audience. Sir, please unmute.
A very good morning to all the distinguished panelists present over here. That is Professor Pennan Chindaswamy from IIT Bombay, Dr. Suresh Babu from World Wildlife Fund, Dr. Sumant Chinthala from National Institute of Technology, Warangal, Dr. Ranjana Ray Chaudhary, and our own Member Secretary of Delhi Pollution Control Committee. And a very good morning to all the children who are present over here from the eco clubs, from various schools and colleges. Today, as has been told to you, it's a celebration of World Water Day. Water, as we all know, and some of us are not even aware, is going to be a huge challenge as we go forward, especially for all the youngsters here. We have to appreciate whatever bounties of nature have been given to us, and that we take adequate care of them. Lakes, rivers, streams, wetlands, and groundwater are part of a single hydrological system. So we have to take care of them in totality, and we have to take a holistic view. As you are all aware, wetlands are directly linked to groundwater, and it fundamentally shapes the kind of aquatic life, the kind of biosphere that they nurture. So there's a fundamental linkage of a rich water body with a complete ecosystem over there. Many of you may not be aware, but in Delhi we have set up a Wetland Authority in 2019, and it has taken up its work with complete rigor and vigor. And we have started inventorizing almost more than 1,000 water bodies, and in which some technical documents have also been prepared to ensure that we have a kind of a vision and kind of a roadmap to ensure the health of these water bodies. And work has been initiated on them, and almost 50% of the water bodies we have been able to prepare action plans and brief documents. And going forward in the next 1 month, month and a half, our endeavor is to finish all the brief documents and action plans for all these water bodies. We have also set up technical committees under experts to look at the action plans that we have made to ensure that they are workable and to ensure that whatever we are doing, we follow it up in a time-bound manner. Delhi government has also taken up an initiative where we have appointed wetland mitras. So almost 90 odd mitras we have appointed. So essentially the role is those people, the children who are interested in some facet of a wetland. So somebody is interested in bird watching, somebody is interested in preservation of flora, somebody is interested in the hydrology part of it. So we have involved the society and we have given them responsibilities, we have given them trainings, and we look forward to working with them very intensively. The future plan of the Wetland Authority is to engage with the land owning agencies like DDA who own those water bodies to prioritize the wetlands and get them back in the shape that they were earlier. Because a lot of these water bodies have been encroached upon, have been buildings have been built, or maybe they are not being looked after by the people around them. So our endeavor is to that at least the water bodies which can be immediately revived, we should revive them and ensure that they thrive. Our collaboration has been with Wetlands International South Asia and the WWF India. They are our knowledge partners and outreach partners, and they have been helping us a lot. So I'm indeed grateful to them from the Wetland Authority of Delhi for whatever help they are providing to us, and they have been really hand-holding us and helping us build our capacities. I would also take this opportunity to thank all the expert speakers who have taken out time to address the future of India, the young children who are attending here. And I'm sure all the children here will find it very useful, whatever is being discussed. And I would request all of you, all the people present over here, to listen very keenly to whatever is being told to you by the experts, because the future belongs to all of you. There are several events that have been organized today, like photography competitions, just a minute video events on this theme. I would request all of you to participate very keenly, and I would I congratulate the department and the Wetland Authority of Delhi for what the efforts that they are making on this day. And I look forward to very engaging kind of participation by all of you. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for those encouraging words. So we start with, I welcome Professor Chinnaswamy, and he is a distinguished
professor in Indian Institute of Technology, Bombay. He will be enlightening us on the use of groundwater for better groundwater resource management. Professor Chinnaswamy, over to you. Kindly Can you hear me? Yeah. Yes, sir. Yeah. I can hear. Great. Thank you. Good morning, everyone. It's lovely to see all the children here who are the future groundwater citizens and going to be taking care of India's water resources. I would like to thank all the dais and members who have invited me. I'll share my screen. Am I allowed to share screen? Yes, sir. Are you unable to share currently? No, I can. I think it's taking some time. Yeah. Is my screen visible? Yes. So, very warm welcome. And again, groundwater has been a very important issue for India because India is the key user of groundwater in the world. So, what I'll be talking about is communal use of groundwater, wherein everyone can come together. Not only the government has to maintain groundwater, but everyone can come together and work for better use of groundwater resources. And this would lead to a good groundwater management. A small introduction about myself. I am Pennan Chinnaswamy. I'm an assistant professor in IIT Bombay with Sitara, which is a very unique department across IIT systems, working only for the rural development. It is called Center for Technology Alternatives for Rural Areas. It is a very focused department for rural development. So, my small outline for today is water issues are really bad in India. Okay, I will share for concern, not to scare you kids, but to understand there is a concern, and you have to start right now for a better life for groundwater. I'll go through that, and then groundwater pollution is happening at a very vast rate, and need for holistic management of water resources along with MARVI approach. Okay, so what we'll be doing is we'll also be creating ownerships of data. I think all these minds are going to end up also in coding and other things, where those can help in getting across the message of better data management and data quality for groundwater management. All this would help in your understanding of groundwater and water resources as per, see, water is present everywhere, as you can see in the hydrological cycle here. Okay, it starts from the ocean, it goes on top to the atmosphere, comes back as rainfall, goes into your wetlands, goes into your groundwater, and groundwater is one of the key resources that gives water to everything. Okay, so it is very scarce. As you see, 54% of India is already under high stress, and there is some management lack, which means there is some concern. They didn't expect such a big issue for water because not only one entity can manage water per se. So everyone has to do their part, and starting from young to old, everyone has to do their part. So water management quantity and quality has to be managed, and some holistic views. Don't just look at water as seawater, water as your river water or your drinking water. You need to connect the dots so that it ends up as a communal source, as a one water resource. If you can look at the cycle here, it is every single drop goes through the cycle, and it turns into seawater one day, it turns into wetland water one day, groundwater one day, and comes back to the sea and atmosphere. So please understand that it is not in silos, it is all combined together, and we need to manage it holistically. So since today is a UN Water Day, World Water Day, and this year's focus is on groundwater.
The connection, sir. Professor Chudhary. Sir, can you hear us? Hello? Sir, your connection is moving up. हेलो एवरीबॉडी प्लीज डू नॉट शेयर ऑन द आइटम जिस पे शेयर स्क्रीन बना होता है उसको शेयर मत कीजिए जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं एंड डॉक्टर पेरेंट्स योर स्लाइड्स इज ऑन द वे सो यू कैन स्टार्ट प्रेजेंटिंग we'll be joining with your slides in just a minute or so. Okay, thank you everybody. Hello, can you hear me? Yes sir, we can hear you. Yeah. So shall I continue? Yes, yes. Yeah. We'll So- share the slides in just a minute. Okay. So, Should I continue? Drop, no, it's not problem. I mean, Continue? Can I start? you can continue, yeah, but Mr. Pennan, please. Yeah. take on. I was waiting for the presentation. Sorry. No, Okay. no. You can So please what do I that. was saying is, groundwater has been the savior, and India is the highest groundwater extractor in the world. The next two countries are China and US. But unfortunately, India extracts more than the groundwater extracted by US and China combined. So please understand that we need to start at once to preserve groundwater. And the whole object of making the invincible visible is people have different understanding of groundwater. Some people say it is like a river flowing underground. Some people say it will be recharged every year, and it will be there for a long time, which is not true. So the whole idea of this UN Water Day is to make people understand it is a very limited resource, and people have to use water very smartly.
Otherwise, there will be some drastic issues for groundwater. Okay. So the third, I'm on the fifth slide, and what it says is I'm going to explain about the communal use. So initially, how groundwater was managed. Everyone had wells, and the government monitors the wells and tells, is it safe to use groundwater or not. But now communal means everyone starts to monitoring. For example, if you have a bank account, everyone has a small account you have or a savings that you can take from your grandfather or mother. The money you take, you know how much it is, so you know how much to spend. Okay. So similarly, if you know how much groundwater exists everywhere, every single location, say it is your well or your agriculture well, or your, I'm on slide 5. So, or your agriculture well, what you would be knowing is that there will be a lot of groundwater dependencies by the people, and people can come together and manage this water success. Okay. So what you see is this big elephant on slide 5, where next 2 slides. This is slide 3, 4, next. Yeah. So on slide 5, the next slide. Yeah. You could see here that everyone thinks that it is a different animal. Okay. No one thinks it's an elephant, but that is what groundwater is. It is like a huge resource, and this has been published by our work called MARVI on Managed Aquifer Recharge through Village Level Intervention, which has been accepted by the government in the promoting groundwater knowledge and technical knowledge. Okay, so it's a very simple concept. Everyone thinks groundwater is different, but if they know how to monitor it and manage it, then they can come together. Please go to the next slide. You could see that the key objectives of this work is you need to understand how much water is available, and how do you do it? By engaging with the people who are using it. It's called participatory data collection, where everyone participates to collect the data and then share the information. If I don't share how much money I have, then you cannot use it communally. So communal means coming together and using it as one source. And that is where you create this participatory data management and work together. The last is engaging with the scientists, government bodies, and also policymakers to understand this groundwater issue better. Okay? So this is called MARVI, Managed Aquifer Recharge through Village Level Intervention. We have trained personally a lot of youngsters like you in the villages. They collect the data using smartphones, mobile apps, and then they send it back to us. When they send it to IIT Bombay and Australian universities where the project is hosted, they convert this level, this image of water from the farmers into a volume. How much water do we have? And that has actually created tremendous opportunities for communal use. Now people know how much water they have. The farmers can come together and say, okay, I'm going to use only little water because we don't have much water. All my friends, all my neighbors can share the water very peacefully. If not, what happens? Everyone puts a pump into the groundwater and pulls all the water out. Then it is a very bad scenario because crops fail, the drinking water is not good in quality. So this is what communal use is. You can bring all the people together, share the data, and once the data is shared, a better picture of groundwater can be made. And now the last slide is on smart agriculture. India is pushing into agriculture 4.0, which means use of ICT, IoT, and all these drones and other fancy items to help agriculture. And one of the most important aspects is your mobile phone. You can take a lot of data using mobile phone. I recommend you to use this app called My Well, which can actually capture the water levels in your well, and you can record it. You can record and send it to the people, and they can all look it together. For example, in Delhi, how much water is available. Okay, and the last one is you have a lot of satellites on the earth, on top of the earth, which can actually map the water resources and help you manage it better. So to conclude, I would like to stress on the fact that climate change is happening. Groundwater is the key savior of all the water resources, because when there is no rainfall, there is no surface water, rivers dry. Okay,
So the groundwater is what keeps the life going on. And so you need to make sure you protect it, do not pollute it, and do not overuse it. So once you are very clear with these objectives, you can manage it better. To manage, you need to measure and monitor, which means you need some system to capture the data and then tell how much water we have. And that is what this communal use of watershed is. So this Marvi approach is like that. And everyone, we have some students from college, we have some students from schools that they come and give data for understanding groundwater. With this, I would like to thank everyone for giving me the opportunity. Please do your part for your groundwater management and conservation. Everyone needs to do the part. Okay, thank you. Am I audible? Hello? Is there any questions I should take or? Thank you, sir. Thank you so much for your kind words. Thank you so much. Is there anyone who has any questions? Since we some huge disconnect between the first speaker. You can raise your hand if you have any questions. Anyone? Yeah. So we'll move. Everybody is clapping, all the kids are clapping and showing thumbs up and all. Move on to I the don't know next. if they understand any clues. So kindly them, बहुत ही Dr. basic Suresh technique Babu, है, sir. He is in WWF India and he will be talking on strengthening of surface and groundwater linkage for healthy rivers. Hello, good morning, everyone. At the outset, wanted to thank Dr. Jayachandran for giving us this opportunity, and also to the Principal Secretary. And I'm just going to talk to you about a couple of things. In the introductory talk, the Principal Secretary sir highlighted 2 or 3 things. One, what he said was that our rivers, our wetlands, and our groundwater are all connected. ये जो चीज है, ये जो कनेक्टिविटी की जो बात है, it's very important to understand. आजकल सब लोग मोबाइल नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करते हैं. थोड़े से टाइम के लिए भी नेटवर्क चला गया तो बहुत परेशान हो जाते हैं, है कि नहीं? परेशान होते हैं कि नहीं, है ना? एक सेकंड के लिए भी नेटवर्क चला गया, ओ माय गॉड, इट्स अ काइंड ऑफ ए क्राइसिस. आप जस्ट इमेजिन, हमारा जो नदियां जो है पहाड़ से निकलते हैं, पहाड़ से नीचे आते हैं, तो सडनली एक डैम आ गया, एक बराज आ गया, तो नदी के लिए एक डिस्कनेक्शन हो गया, एक फ्रैगमेंटेशन हो गया. नदी ऊपर अपस्ट्रीम के हिस्से और डाउनस्ट्रीम के हिस्से डिस्कनेक्ट हुए हैं. तो इसको हम कनेक्टिविटी बोलते हैं टेक्निकल टर्म्स में. तो नदियों को कनेक्टेड रहना है, पानी ऊपर से नीचे तक बहना है, पहाड़ से समंदर तक बहना है, then only it can be called as a river. दूसरी चीज, कितने लोग यमुना जी गए हैं? यमुना रिवर किस किसने देखा है? If you can raise your hands. ब्रिज से देखे हैं या नदी में जाके देखे हैं आप? ब्रिज से देखे हैं. अच्छा, नदी में भी जाके हमें देखना है. और नदी के जो दोनों साइड्स में जो लैंड होते हैं, इसको हम फ्लड प्लेन्स बोलते हैं. तो नदी जब बहते हैं, नदी का जो पानी है फ्लड प्लेन्स में भी जाते हैं, ठीक है? तो इसको हम लैटरल कनेक्टिविटी बोलते हैं, मतलब साइड वाइज जो पानी बहते हैं तो वो हम लैटरल कनेक्टिविटी बोलते हैं. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इसलिए हमारा फ्लड प्लेन्स जो है और फ्लड प्लेन वेटलैंड्स जो है नदी के लिए बहुत बहुत जरूरी है. और तीसरी क्वेश्चन मेरा ये आपसे है, और उसके बाद मैं प्रेजेंटेशन शुरू करूंगा. आपके घरों में पानी कहाँ से आते हैं? टैप से आते हैं, ओके?
टैप से आते हैं तो वो किसी के पास दिल्ली जल बोर्ड का पानी आते हैं, किसी के पास अपने अपने ही बोरवेल है, बोरवेल से पानी आते हैं। तो ज़्यादातर लोगों के पास बोरवेल का भी पानी आते हैं, दिल्ली जल बोर्ड का भी पानी आते हैं। तो ये जो ग्राउंड वाटर है, ग्राउंड वाटर और हमारे नदी का क्या कनेक्शन है, कुछ है कि नहीं? नदी, भूजल और नदी का कोई कनेक्शन है? अभी पहला जो प्रोफेसर साहब ने बात किया था उन्होंने भी इसके बारे में बात की थी, है ना? वो भी कनेक्टेड है, नदी और भूजल और वेटलैंड्स, ये तीनों चीजें जैसे सर ने पहले स्पीच में कहा, ये तीनों कनेक्टेड है। तो मैं इसके बारे में एक दो चीजें कहना चाहूंगा। यमुना जी आज के डेट में यमुना जी में काफी परेशानियां है। एक तो फ्रेश वाटर पानी कम आते हैं, वजीराबाद बराज के नीचे बहुत कम फ्रेश वाटर है, और दूसरी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है। लेकिन आप बच्चे, आई एम रियली थैंकफुल दैट यू हैव टेकन आउट योर टाइम, एंड आई वांटेड टू थैंक Jayendran sir and the whole team to bring you all into this discussion as to what we can do for ourselves, do for our rivers together. तो मेरा प्रेजेंटेशन 3-4 स्लाइड में आपको दिखा दूंगा, एंड जस्ट वांटेड टू make you think on that, and then I will take up the questions. Okay. स्क्रीन दिख रहा है आपको? Can you see my screen? Yes, sir, we can see. Yes. Yes, Okay. तो ये जो कनेक्टिविटी की जो बात की थी, ये पिक्चर आप याद रखना है। माउंटेन से पानी आते हैं, लेकिन उसका हक है कि वो नदी सिटी से होके, रूरल एरिया से लेके वो अपने डेस्टिनेशन जो है डेल्टा या ओशंस या सी, उस तक पहुंचना है। उसके रास्ते में आपको ये दिखने को मिलेगा कि वहाँ पे फ्लड प्लेन्स है, वहाँ पे सबसर्फेस फ्लोस है, एक्विफर है, सब कुछ कनेक्टेड है। सो इट्स काइंड ऑफ अ बेसिन that we are talking about, river, wetland and groundwater. It's all connected. Now मैंने अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम की बात की थी। अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में जैसे आप इस स्लाइड में देखेंगे, डैम आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, बराज आ गया, तो दैट ब्रेक्स द कनेक्टिविटी, एंड द रिवर कैनॉट फ्लो डाउनस्ट्रीम, वाटर कैनॉट फ्लो, सेडिमेंट कैनॉट फ्लो, और लाइफ कैनॉट फ्लो। मछलियां काफी सारे होते हैं, वो डाउनस्ट्रीम नहीं जा सकते। लैटरल कनेक्टिविटी में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, रोड्स है, रेलवेज है, बिल्डिंग्स है, एनक्रोचमेंट है, वो सब नदियों को लैटरली विड्थ वाइज बहने से रोक देते हैं। एंड वर्टिकली ओवर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर हैज लेड टू द लॉस ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन रिवर एंड द ग्राउंड वाटर। एंड ये तीनों कनेक्शंस है, lateral, longitudinal and vertical, this need to be taken into account. और ये The this is screen also is very, invisible. Sir, can you Sorry? please share it again? It has stopped. The screen is not visible. Can you please share? screen is not visible. No, Can you sir. share the Oh. screen? Okay, I'm not sure why it is. I'll try once more, and oh. Oh, it's okay. It's fine. So then I'll go without a presentation. Sorry about that. I'm unable to project it. ओके, द सेकेंड पार्ट इज जो ग्राउंड वाटर है और नदियों का जो रिश्ता है, कुछ नदियां ऐसा है कि वो ग्राउंड वाटर को पानी छोड़ देते हैं, it loses water to the groundwater, and some of those rivers are called influent streams, and second one is the effluent streams, and this is very important. हमारे दिल्ली के लिए बहुत बहुत जरूरी है ये जानना कि हमारे यहाँ पे effluent rivers जो है that actually get their water from groundwater as base flows.
हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने जो सिटी में जो भी पुराने स्ट्रीम्स हुआ करता था, काफ़ी पहले इंटैक्ट ने मैपिंग किया था पैलियो चैनल्स का, इसका एक बार और हमें समझने की ज़रूरत है कि हमारे यहाँ पे एफ्लुएंट रिवर्स कितना है, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स कितना है, ताकि उसके बेसिस पे जो सर ने अभी कहा कि हज़ारों वेटलैंड्स का हमने ऑलरेडी मैपिंग किया हुआ है, उसका ब्रीफ डॉक्यूमेंट्स बना है, मैनेजमेंट प्लान्स बना है, सब कुछ काफ़ी जोर से वेटलैंड रिस्टोरेशन का काम चल रहा है। जो एफ्लुएंट रिवर्स है विच कैन एक्चुअली फीड द बेस फ्लोस इनटू द रिवर्स, उनको हम आइडेंटिफाई करें एंड वहाँ का जो वेटलैंड्स है उसका वेटलैंड का रिस्टोरेशन का स्ट्रैटेजी हम तैयार करें। जैसे मैंने वजीराबाद की बात की, वजीराबाद बराज के नीचे हमारे लिए पानी काफ़ी कम आते हैं। लोग पर्यावरणीय प्रभाव, एनवायरमेंटल फ्लोज की बात कर रहे हैं, ऊपर से पानी ज़्यादा छोड़ने की बात कर रहे हैं, लेकिन एक चीज़ ध्यान से हमें ये भी देखना होगा कि हमारा फुटप्रिंट क्या है, हम कितना पानी इस्तेमाल कर रहे हैं दिल्ली में। एंड मैं अगेन वेटलैंड अथॉरिटी के जो साथी हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हम बच्चों से पूछें कि उनका पर डे कितना कंजम्पशन होते हैं पानी का। कैन एनीवन आंसर हाउ मच वाटर डू यू कंज्यूम इन अ डे? आप चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, चैट बॉक्स में डाल सकते हैं कितने कितने पानी आप इस्तेमाल करते हैं पर डे। कौन-कौन All of you, please write in the chat box. What do you think, according to you, is your water consumption per day? Sir, 50 to 60 liters. 50 to 60 liters, 10 to 12 liters किसी ने लिखा है, एंड आई गेस 5 बकेट्स। बकेट 20 लीटर का बकेट है या 10 लीटर का है, वो भी क्लैरिफाई करें। तो 50 टू 100 लीटर्स हो गया, 10 टू 15 लीटर्स। सो नाउ ये अगेन आई विल रिक्वेस्ट यू एज अ फर्स्ट स्टेप, सभी बच्चे करीब 80 के आसपास बच्चे हैं, पार्टिसिपेंट्स हैं इसमें, प्लीज गो बैक, आप अपने पर डे का कंजम्पशन आप मेजर करो, कितना बकेट पानी आप यूज कर रहे हैं, कितने मिनट आप शावर ले रहे हैं, कितने लोड्स ऑफ वॉशिंग मशीन में आप कितने क्लोथ का लोड डाल रहे हैं, ये आप मेजर करके फिर आप अपने जो वेटलैंड अथॉरिटी के जो भी कोलीग्स है उनसे आप बता दीजिएगा। तो आपको समझ में आएगा कि कुछ लोग, अब जैसे इसमें लिखा है 30 लीटर पानी में जी रहे हैं, लेकिन कुछ लोग 400-500 लीटर पानी पर डे इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है, जब तक हम अपना डिमांड को मैनेज नहीं करेंगे तब तक हमारे नदियों में पानी नहीं आ सकता। ये हम बात की कि हमारे डायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट की। मैं एक सवाल आपसे पूछूंगा, आप में से टिश्यू पेपर्स कितने लोग यूज करते हैं? टिश्यूज यूज करते हैं? टिश्यू पेपर एक थम्स डाउन दिखा है, मतलब नहीं करते हैं। काफी सारे लोगों ने टिश्यू पेपर। एक चीज बताइए, एक शीट टिश्यू पेपर में कितना लीटर पानी एम्बेडेड है? पेपर बनाने में पानी चाहिए, है कि नहीं? पेपर कहीं से तो आता होगा, उसका प्रोसेस करना होगा, उसमें एफ्लुएंस निकलते हैं। तो वाटर फुटप्रिंट नेटवर्क के हिसाब से करीब 2.5 लीटर्स के आसपास एक शीट टिश्यू के अंदर पानी है। दिस इज कॉल्ड एज एन इनडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट। चीनी खाते हैं सब, मिठाई खाते हैं, होली में बहुत सारे गुजिया खाए होंगे आप लोग, है कि नहीं? शुगर ग्रो करने में कितना लीटर पानी यूज करते हैं? जूते पहनते हैं, लेदर शूज, जीन्स पहनते हैं, सब कुछ। हाँ, तो 1 किलोग्राम शुगर में करीब 2000 लीटर पानी उसको बनाने में यूज होते हैं। मतलब शुगर केन इज आल्सो कॉल्ड एज अ थर्स्टी क्रॉप। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि आप शुगर यूज ना करें, लेकिन शुगर को भी स्थायी रूप से सस्टेनेबल वे में ग्रो करने का तरीका काफ़ी सारे अवेलेबल है। देयर आर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, काफ़ी सारे कंपनीज इंडिया में भी बॉन्ड सुक्रोज स्टैंडर्ड्स करके उसमें वाटर और पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स कम में इस्तेमाल होते हैं, एंड ये और सस्टेनेबल वे में ग्रो करते हैं। तो आप, अपना जिम्मेदारी है कि प्रोड्यूसर से ये पूछें कि क्या आप कितना पानी इस्तेमाल करते हैं, आपका फुटप्रिंट क्या है। ये वाटर फुटप्रिंट का जो टर्म है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। एंड एज एवरीवन सेड, यू गाइस आर द फ्यूचर एंड आप, यू शुड स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इट। जीन्स में कितना लीटर पानी इस्तेमाल होते हैं? जीन्स वॉशिंग तो है ही,
लेकिन जीन्स प्रोड्यूस करना है 8,000 लीटर के आसपास पानी इस्तेमाल होते हैं इसमें। उसमें कॉटन का ग्रोथ है, जीन्स प्रोसेसिंग है, डाइंग है, प्रिंटिंग है, काफी सारे चीज। एंड काफी सारे कंपनीज, ग्लोबल कंपनीज एंड नेशनल कंपनीज आर आल्सो मूविंग टुवर्ड्स सस्टेनेबल स्टैंडर्ड। सो व्हाट यू नीड टू कीप इन माइंड इज, जब हम नेगोशिएट करते हैं वेंडर से, अच्छा 50 रुपए की चीज हमें 40 रुपए में मिलेंगे तो अच्छा लगता है, लेकिन उनसे ये भी पूछो कि अगर आप 50 लीटर पानी इस्तेमाल कर रहे हैं तो 40 लीटर में आप बना के हमें दो। सो दिस डिमांड हैज टू कम फ्रॉम यू। तो मेरा एक रिक्वेस्ट आपसे है कि आप अपना डायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट और इनडायरेक्ट वाटर फुटप्रिंट, डायरेक्ट मतलब हमारा टॉयलेट, हमारा क्लीनिंग, हमारा कुकिंग, ड्रिंकिंग, वॉशिंग, ये सब एक तरफ रखिए, और दूसरी तरफ आप अपना इनडायरेक्ट पेपर यूज, आपका कंजम्पशन, फूड वाला कंजम्पशन, वो सब आप लिस्ट डाउन करिएगा एंड टेल अस how much water do you consume in a day, and then compare. There are global standards available to see where we stand. वो एक first, and I think it's a very important step. 20 million people हमारे स्टेट में है। अगर हम सब 1 लीटर पानी भी बचा देते हैं तो 20 मिलियन लीटर्स ऑफ वाटर हमारे यमुना में रहेंगे और हमारे ग्राउंड वाटर में रहेंगे, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली उतना उसका 80% पानी लेस पोल्यूट होके हमारे नदी में आते हैं। तो इट्स ए विन विन, आपके लिए भी पानी का बिल, पानी का जो पंपिंग का कॉस्ट है वो सब कम होगा, नदी भी बच जाएंगे। सो आई जस्ट वांटेड टू रिक्वेस्ट यू दिस, एंड आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू टेल यू, बट मेजर योर वाटर फुटप्रिंट, टेक सिंपल स्टेप। कोई गवर्नमेंट की हेल्प नहीं चाहिए हमें, ये अपने आप एक जिम्मेदारी लें, अकाउंटेबिलिटी ले, एंड आप इसके काम करिएगा। सेकेंड पॉइंट, एंड दिस इज अगेन, अगर हमें ग्राउंड वाटर सस्टेनेबल रखना है, एंड दैट इज द थीम ऑफ टुडे, ग्राउंड वाटर इज द थीम ऑफ दिस वर्ल्ड वेटलैंड डे, एंड ग्राउंड वाटर अगर मैनेज करना है तो हमारा वेटलैंड्स हेल्दी रखना है। एंड मेरा ये रिक्वेस्ट है, आप अपने आसपास के, अपने इलाके में जो वेटलैंड्स है उसके वहां तक जाइए, और उसका क्या क्या इश्यूज है और उसको कैसे सुधारे उसके बारे में आप सोचिए, और आप दिल्ली वेटलैंड अथॉरिटी को आप प्लीज अपना 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 सजेशंस और अपना ओपिनियन दे, एंड वी आर हैप्पी टू हैंड होल्ड यू। जैसे जयचंद्रन सर ने और प्रिंसिपल सेक्रेटरी सर ने कहा कि वी आर हैप्पी टू ट्रेन यू हाउ टू मॉनिटर द वाटर क्वालिटी ऑफ द वेटलैंड्स, वी विल बी हैप्पी टू डू दैट। एंड काफी सारे बच्चे जुड़ गए हैं इस कैंपेन में, एंड काफी सारे बच्चे ये कर भी रहे हैं, एंड इट विल बी एन इंस्पिरेशनल स्टोरी फॉर यू टू join forces and work as a veteran mitra in your area, and अपने स्कूल को मोटिवेट करिए वाटर फुटप्रिंट नापने में और वाटर फुटप्रिंट रिड्यूस करने में। मैं इतना ही कहूँगा, एंड कभी भी अपने नदियों का नेटवर्क कनेक्टिविटी को बंद होने नहीं देना है, कनेक्टिविटी मेंटेन करना है, ऊपर से नीचे तक बहना है, साइडवेज बहना है और नीचे बहना है। एक 3 डायमेंशनल कनेक्टिविटी, हम 3D मूवीज से बहुत फैसिनेशन होते हैं हमें, वैसे ही 3 डायमेंशनल कनेक्टिविटी हमारे नदियों के लिए, हमारे वेटलैंड के लिए, हमारे ग्राउंड वाटर के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड लेकिन शुरुआत आप अपने डिमांड मैनेजमेंट से करें, अपने पानी का फुटप्रिंट नापिए एंड उसको रिड्यूस करिए। मैं इतना ही कहूँगा, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर अ पेशेंट लिसनिंग, and thank you Jayendran sir and the Wetland Authority for giving me this opportunity. Thank you. Thank you, sir, for such insightful points and sharing your knowledge with the students. We have a question from Anushka. So she's asking that, does ocean water or sea water seep inside the earth? If yes, is it salty? Then it is inside. Sir? Sir, am I audible? So Sir, can am I you hear audible? me? Yes, sir. He's saying he has not designed everything. He just come here to show the color, and the design is totally finalized. Oh, yeah. I have it. Sir, please unmute yourself. Yeah. So I was muted at that time. Yeah. So it's an interesting question. Oceans का जो
ओशन का जो सैचुरेशन लेवल है, ठीक है, सो दैट इज क्वाइट डिफरेंट, सो इट इज कंप्लीटली सैचुरेटेड विद सॉल्ट वाटर. तो इश्यू वहां पे नहीं है. Ocean serves a purpose in terms of it plays a huge role in our water cycle. प्रॉब्लम जहां पे होते हैं जब पोल्यूटेड वाटर, हाई टीडीएस वाला, हाई टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स वाला अपने फ्रेश वाटर सिस्टम्स में सीप करते हैं, देन देयर इज अ प्रॉब्लम बिकॉज देयर इज एन इंक्रीजिंग सलाइनिटी. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, हमारा फ्रेश वाटर फ्लोज, जैसे मैंने कहा है कि काफी सारे नदी अपने ओशंस तक नहीं पहुंच रहे, उस वजह से जैसे फॉर इंस्टेंस हमारा वेस्ट बंगाल का काफी सारे इलाका ऐसे हैं वहां पे ग्राउंड वाटर डिप्लीशन के कारण सी वाटर अपने ग्राउंड वाटर में आ रहे हैं. So that is a bigger worry than the question that you asked, whether ocean or sea water seep inside the earth. The salinity ingression from oceans into our freshwater sources is a matter of worry, and therefore we need to maintain our rivers flowing, maintain our groundwater levels in a healthy state. Else, हमारा पूरा salinity में जाएगा, फिर आरओ लगाएंगे, आरओ का कूड़ा कहाँ डालेंगे, and wastefulness. So all kind of mess will begin to happen. So we need to be worried about it. Thank you, Anushka, for your question. Does any other student have any question? So I can take up one of the questions for each of going forward. Understood what sir told you. Thank you so much, sir. Thank you for sharing your knowledge. Thank you for encouraging the students in conserving water and learning more about groundwater. Thank you so much. So now we move on to our third speaker, Dr. Suman Chitala. He is an assistant professor in National Institute of Technology, Warangal, and he will be speaking to you about groundwater pollution. Good morning, everyone. Is my voice audible? Yes. So, a very good morning, bachcho. Nice to see you all on this auspicious day. So, I will be sharing my presentation. And before I share my presentation, I would like to ask कि हमें खाना कहाँ से मिलता है? Where do we get our food from? हमें खाना मिलता है फार्मर्स से, राइट? तो आज हम फार्मर्स, ठीक है, नेचुरली मिलता है, सब जगह से मिलता है, लेकिन मेनली मिलता है वो हमारे फार्मर्स जब होप माय स्क्रीन इज विजिबल, राइट? स्क्रीन विजिबल है? Sir, it was visible earlier. Now is it not? It is not. Can you please share once more? I'll share again. It's visible, right? Yes, sir. Okay. So हम आज उस फार्मर्स की भी बात करेंगे. इस ग्राउंड वाटर पोल्यूशन और उस फार्मर्स से क्या रिलेशन है वो भी मैं बता दूंगा. और अभी अनुष्का जी ने एक क्वेश्चन भी पूछा है ना सॉल्ट वाटर के बारे में, उसके बारे में भी मैं अपने प्रेजेंटेशन में बता दूंगा. ठीक है? तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि मैं हूं कौन. मैं एक फैकल्टी हूं, एनआईटी वारंगल में पढ़ाता हूं एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, और मैं एक संस्था का भी डायरेक्टर हूं ब्लड कनेक्ट फाउंडेशन के बारे में. तो उसमें मैं ब्लड डोनेशन के बारे में बात करता हूं. आप छोटे छोटे बच्चे हो इसलिए यहाँ ब्लड डोनेशन के बारे में नहीं बात करूंगा. बड़े लोगों से मैं ब्लड डोनेट करवाता हूं, छोटे बच्चों से नहीं. ओके. सो और मैं एक इंडोर एयर पोल्यूशन के बारे में भी काम करता हूं, जो अब बात नहीं करूंगा क्योंकि अब हम आज पानी के बारे में बात करेंगे. ओके. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड अबाउट आवर प्रेजेंटेशन. तो पहले मैं एक फार्मर की कहानी बताना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू टेल यू ए स्टोरी ऑफ ए फार्मर. हर रोज की तरह एक फार्मर अपने फील्ड पे गया है. सुबह सुबह उठ के अपना मोटर ऑन किया जमीन से पानी निकालने के लिए. और ये बच्चों, ये
रियल लाइफ स्टोरी है, ये कहानी नहीं है, रियल लाइफ इंसिडेंट है ये। तो बेचारे फार्मर ने ये देखा कि उसके फार्म में ये काला पानी आ गया था, एंड दैट फार्मर वाज शॉक्ड। अरे भैया मैंने कुछ नहीं किया और मेरे फार्म में ये काला पानी कैसे आ गया? उसको पता नहीं था। जो भी लिखा था जो तेलुगु में है, मैं इसीलिए रखा है ताकि मैं जगह का नाम भूल ना जाऊं। वो हैदराबाद के पास में एक जगह है। तो I think I lost the screen connection. Yes, sir. I think there is some issue. So shall I reshare again? Yes, sir. Okay. I'm resharing. I'm resharing. I don't know. There is some issue with this. Okay. I'm resharing. No issues. तो प्रॉब्लम क्या है कि दैट फार्मर, उसको पता चला था कि किसी ने नियर टू हिज फील्ड कुछ वेस्ट को डंप किया है, और वो धीरे धीरे जमीन के अंदर गया इनटू द ग्राउंड, एंड वो अपने वाटर में मिल गया है। अब वो अपनी जमीन को, अपनी क्रॉप को पानी नहीं दे सकता। ये पहला प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम, बाहर पानी है तो साफ कर सकते, लेकिन अंडरग्राउंड का पानी को हम क्लीन नहीं कर सकते। क्लीनिंग ऑफ ग्राउंड वाटर इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। और ये एक फार्मर की कहानी नहीं है, हमारे देश में लैक्स ऑफ फार्मर्स को यही प्रॉब्लम हो रहा है। इसीलिए हम सबको ग्राउंड वाटर पोल्यूशन के बारे में जानना है। वी हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, एंड वी हैव टू इंश्योर दैट कि हमारे जो फार्मर्स हैं उनको तकलीफ ना पहुंचे। ओके, शैल वी मूव फॉरवर्ड? ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो सबसे बड़ी चीज दोस्तों, मैं ये बताना चाहता हूं कि ग्राउंड वाटर जो है ना, वो दिखता नहीं है। जैसे ये यहाँ पे ब्लू कलर है ना, ये मतलब जमीन के नीचे होता है, वो दिखता नहीं है, फिर भी वो इंपॉर्टेंट है। जो सरफेस में हो रहा है वो दिख जाता है, लेकिन ग्राउंड में अगर जमीन के अंदर कुछ प्रॉब्लम होता है वो हमें नहीं दिखेगा। इसीलिए वो लोग बोलते हैं कि ग्राउंड वाटर में बी आउट ऑफ आवर साइट, बट इट मस्ट नॉट बी आउट ऑफ आवर माइंड। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगर कंटामिनेटेड पानी, ग्राउंड वाटर कंटामिनेट हो गया और अगर हमने पानी पिया है तो ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। हमें अच्छा पानी मिल रहा है, अगर हमारे पास पानी अच्छा नहीं मिलता है तो हम मिनरल वाटर पिएंगे, लेकिन कुछ रूरल एरियाज में ना मिनरल वाटर की सुविधा नहीं होती। उनको जो वाटर मिलता है वो बच्चे बेचारे वही पानी पिएंगे, एंड उसमें अगर फ्लोराइड ज्यादा होता है, उनके बोन्स जो है वो बेंड हो जाते हैं। फ्लोराइड अगर पानी में ज्यादा होता है तो, फ्लोराइड एक केमिकल होता है जो पानी में एक्चुअली वो नेचुरल रीजंस की वजह से मिलता है, और कुछ जगह पे आर्सेनिक भी होता है। ये वेस्ट बंगाल कुछ एरियाज में, हर जगह पे नहीं है लेकिन कुछ जगह पे। और जो वो पानी पिएंगे उनका स्किन कलर चेंज होना, और उनको बहुत सारे हेल्थ के प्रॉब्लम्स भी आने लग गए हैं, बहुत सारे बीमारियां भी आने लग गए हैं। तो इसीलिए हमें ग्राउंड वाटर के बारे में पता करना बहुत बहुत जरूरी है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द ग्राउंड वाटर पोल्यूशन, बिकॉज द ग्राउंड वाटर हैज अ लॉट ऑफ हेल्थ इफेक्ट्स। एंड बाद में बच्चों, द प्रॉब्लम ये हो रहा है कि इसमें बहुत सारा चीजें हैं। मैं थोड़ा क्रिस्पली बताता हूं कि ये जो ग्राउंड वाटर से अगर तुम पोटैटो या राइस, चावल ग्रो करोगे, ये आर्सेनिक चावल में भी चला जाएगा और अपने पोटैटो में भी चला जाएगा, और इस तरह की चीजें आप खाओगे तो आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। If these contaminants from groundwater enters into your food, they will cause a lot of harm to your health. तो अब हम देखेंगे कि प्रॉब्लम क्या हो रहा है हमारे पास। इंडिया में बहुत सारे प्रॉब्लम, इंडिया बहुत बड़ा देश है, एक एक जगह पे एक एक प्रॉब्लम है। अगर आप राजस्थान में देखोगे ना, वहां पानी है ही नहीं। आई एम शेयरिंग इट अगेन, समथिंग गॉट डिस्कनेक्टेड। जैसे राजस्थान जैसे जगह है वहां पानी है ही नहीं। और जैसे लद्दाख जो है कश्मीर में, वहां पे पानी है लेकिन पूरा आइस में है।
वहां पे भी प्रॉब्लम है, पानी उतने आसानी से नहीं मिलता लद्दाख में। एंड कुछ जगह पे पानी है लेकिन वो खराब है, वो खराब पानी हम पी नहीं सकते। अगर पिएंगे तो जो मैंने दिखाया ना प्रीवियस स्लाइड में, उस तरह का हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। ठीक है, जो भी बचा हुआ अच्छा पानी है वो भी हम कंटामिनेट कर रहे हैं। वी आर कंटामिनेटिंग दैट ग्राउंड वाटर, एंड वॉट एवर वाटर इज एक्सेसिबल उसको भी हम अनयूजेबल बना रहे हैं। कैसे? तो हमें ये पता करना होगा कि हमारे पानी क्यों खराब हो रहा है, हमारा ग्राउंड वाटर क्यों खराब हो रहा है, वो मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट स्लाइड पे। एक चीज है कि वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल माने कि अगर आप कचरे को फेंक देते हो सरफेस में कहीं पे ओपन एरिया में, उस कचरे से जब भी पानी मिल जाता है, वो पानी उस कचरे में से जो भी पोल्यूटेंट है उसको ग्राउंड वाटर तक ले जाता है। दूसरा, लोग कचरा जलाते हैं, कचरा जलाने के बाद जो ऐश होता है, वो ऐश भी जब पानी से मिलता है, वो ऐश में जो भी कंटामिनेंट्स हैं वो भी ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। तीसरा, बहुत सारे फार्मर्स को नॉलेज नहीं होता कि कितना पेस्टिसाइड डालें, वो बहुत डाल देते हैं। अब ज्यादा पेस्टिसाइड डालोगे तो वो भी ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं। और ये एक्वाकल्चर, एक्वाकल्चर माने कि अगर आप प्रॉन्स वगैरह ग्रो करना चाहते हो कुछ तालाब में, उनमें भी वो लोग ज्यादा केमिकल्स डालने लगे हैं। और भी बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं मेन रीजन बता रहा हूं। मतलब जो भी आप कर रहे हो, कचरा डंप करना, कचरा जलाना और ज्यादा पेस्टिसाइड्स यूज करना, इन सारे चीजों की वजह से ना आपकी ग्राउंड वाटर पे बहुत बुरा असर पड़ रहा है। बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस आवर ग्राउंड वाटर इज गेटिंग अफेक्टेड। तो यही चीज मैं अपना प्रीवियस स्लाइड में बता रहा था बच्चों, कि अगर आप वेस्ट को बर्न करोगे, वो ऐश जो है धीरे धीरे जब बारिश होती है, जब पानी में बह जाता है, वो धीरे धीरे ग्राउंड वाटर में जाके पूरा ग्राउंड वाटर को कंटामिनेट कर देता है। एक बार ग्राउंड वाटर पूरा कंटामिनेट हो जाता है, उसको ठीक करना बहुत मुश्किल है। और ये ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम्स जो है ना हर जगह पे है, बिहार में भी है, दिल्ली में भी बहुत सारे जगह पे ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम है। क्यों? दिल्ली में भी लोगों ने कचरा फेंके थे, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ चुके थे। तो हमें यह समझना होगा कि हम जो जो भी एक्शंस कर रहे हैं, हमें ध्यान रखना होगा कि जिसकी वजह से हमारे ग्राउंड वाटर के ऊपर इफेक्ट ना पड़े। अब ठीक है, ये थोड़ा बड़ा इश्यू है, मैं उतना नहीं बोलना चाहता। होता क्या है कि जब गांव के लोग सिटी में ज्यादा लोग आने लगते हैं अर्बनाइजेशन के नाम पे, क्या होता है कि गांव में जो जमीन है ना वो यूज नहीं होता है। जब यूज नहीं होता है, सॉइल एरोजन होता है, सॉइल खराब होती है, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दोज रीजंस ग्राउंड वाटर घट जाती है और बहुत सारे प्रॉब्लम्स भी आते हैं। इसकी वजह से भी इनडायरेक्टली पोल्यूशन बढ़ता है, डायरेक्टली नहीं। ये बहुत बड़ा इश्यू है, आप समझ नहीं पाओगे, इसके बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो अब मैं बता दूंगा कि ये एक स्टूडेंट अनुष्का ने जो पूछा है उसके बारे में। ठीक है, हम दिल्ली में है, दिल्ली के पास कोई समंदर नहीं है एंड ऑल, लेकिन समंदर के एरिया में फ्रेश वाटर भी होता है और सॉल्ट वाटर भी होता है। जब आप ज्यादा से ज्यादा फ्रेश वाटर निकालोगे तो क्या होता है कि प्रेशर का चेंज हो जाता है। जब प्रेशर की डिफरेंस आ जाती है, समंदर का पानी लैंड के अंदर घुस जाता है नीचे। अगर प्रेशर ठीक रहेगा तो अच्छा पानी मिलेगा, अगर आप ज्यादा पानी निकाल लोगे तो प्रेशर चेंज हो जाएगा और सॉल्ट वाटर नीचे आ जाएगा और टेस्टी रहेगा, टेस्ट सॉल्टी हो जाएगी। ठीक है, कहानी वहां तक खत्म नहीं होता बच्चों। प्रॉब्लम ये होता है कि अगर उस पानी से अगर आप एग्रीकल्चर में यूज करने के लिए कोशिश करोगे, तो देखो यहाँ फार्मर बैठा है ना, ऐसा पूरा लैंड में सॉल्ट सॉल्ट आ जाता है और उस लैंड में कोई भी एग्रीकल्चर नहीं होता। सो ये अफ्रीका के सबसे बड़ी नदी है नाइल, आपने सुना होगा ना, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स, वन ऑफ द बिगेस्ट रिवर्स नाइल। नाइल रिवर में यही हो रहा था, पूरा ग्राउंड वाटर उन्होंने ले लिया। अब क्या हुआ कि समंदर अंदर आ चुका है, जमीन के अंदर, और बेचारों को पता नहीं था, बेचारों ने पानी निकाल लिया और पूरा लैंड खराब हो गया उनका। अब खराब लैंड में उसको कुछ नहीं हो सकता, एंड दो फार्मर्स आर सफरिंग। अगर हम ध्यान नहीं देंगे, हमारे कोस्टल एरियाज में भी ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसीलिए हम सबको ये जानना जरूरी है,
so that कि हम ये ग्राउंड वाटर के प्रॉब्लम से बचे और हमारे फार्मर्स को बचाएं. एंड ग्राउंड वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए हमें सिर्फ पानी को नहीं देखना चाहिए, हमें पानी के साथ साथ अपार्ट फ्रॉम वाटर हम हवा में क्या बर्न कर रहे हैं, सॉइल में क्या डाल रहे हैं, पानी में सीधा क्या डाल रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं, मतलब कंप्लीटली कनेक्शन देखना पड़ेगा हमको. ऐसा नहीं कि सिर्फ पानी के बारे में सोचने से ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा बच्चों. वी हैव टू एंश्योर दैट कि we have to understand that there is a relationship between soil and water, there is a relationship between water and air, there is a relationship between water and humans, और ये इंटरैक्शन है. इस इंटरैक्शन को समझते हुए हमें अपना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना पड़ेगा. नेक्स्ट, हम क्या कर सकते हैं. नाउ यू आर ऑल वेरी मोटिवेटेड चिल्ड्रन, मोटिवेटेड बच्चे हो आप लोग, आप कुछ करना चाहते हो एनवायरनमेंट के लिए. क्या कर सकते हैं, आप पहले लोकल एरियाज में जो भी इश्यूज है उसको आइडेंटिफाई कीजिए एंड आइडेंटिफाई लोकल हीरोज हु आर वर्किंग. जो भी ऑलरेडी उस इश्यूज पे काम कर रहे हैं उनके साथ मिलके काम करो. गेट ट्रेंड इन इकोसिस्टम रिस्टोरेशन. मतलब आपको अगर कोई बताएगा कि पानी को हैंडल कैसे करते हो, बहुत बड़ा टेक्निकल चीजें है, वो चीजों आप उनसे सीख लो. अगर ग्राउंड वाटर कंटामिनेट होने से बचाना है, बहुत सारे चीजें करने पड़ते हैं, तो उसके लिए आपको ट्रेन होना पड़ेगा और आपको जरूरत पड़ी तो डेटा कलेक्ट करनी पड़ेगी और डेटा कलेक्शन में आपको मदद करना पड़ेगा. यू हैव टू हेल्प पीपल इन कलेक्टिंग द डेटा. एंड लास्टली बच्चों, दिस इज माय लास्ट स्लाइड. अगर हमारे फार्मर्स हैप्पी नहीं रहेंगे, अगर हमारे फार्मर्स खुश नहीं रहेंगे, अगर हमारे फार्मर्स को प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगे, वो हमारे लिए खाना नहीं दे पाएंगे. तो हमारे लिए खाने देने वाले जो फार्मर्स जो हैं, उनकी भला के लिए भी हमें ये ग्राउंड वाटर पोल्यूशन की प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. फॉर दैट ऑल द स्टूडेंट्स शुड कम टुगेदर एंड हेल्प आवर फार्मर्स. सो विद दिस आई एम क्लोजिंग माय प्रेजेंटेशन. थैंक यू फॉर लिसनिंग बच्चों. एंड कोई डाउट्स है तो पूछ सकते हैं आप लोग. Thank you so much, Dr. Suman. You have guided the students so well. कितने अच्छे से आपने इनको सारा कॉन्सेप्ट समझाया. Thank you so much for sharing your knowledge, sharing your insights. Students, if you have any question, कुछ भी अगर आपको सर से पूछना हो, anyone, you can unmute or you can write in the chat box. You want to ask anything? Know more about? बच्चों पूछ लो बच्चों, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप. हाँ, very good Anushka. 2 more questions. Do plants play any role in preventing groundwater from getting contaminated? Yes, can plants absorb contaminated water if they are planted in a place with contaminated water? Yes बेटा, फाइटोरिमीडिएशन बोलते हैं उसको. उसमें क्या होता है, सॉरी मैंने स्पेलिंग गलत लिखा है, फाइटोरेमिडिएशन. उसमें क्या होता है कि प्लांट जो है कंटामिनेंट्स को ले लेता है, जमीन से कंटामिनेट होने से बचाता है, लेकिन वो भी बहुत मुश्किल काम है. उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे चीजें देखने पड़ेंगे कि ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन है, कम कॉन्सेंट्रेशन है, बहुत सारे टेक्निकल चीजों को देखना पड़ेगा बेटा. वो भी उतने आसान नहीं है. सोल्यूशन है लेकिन बहुत टाइम भी लगेगा और बहुत मुश्किल भी है. जितना आसानी से दिखता है उतना आसान नहीं है. बट देयर इज ए चांस बेटा. वेरी गुड क्वेश्चन. अदर्स, एनी क्वेश्चंस बच्चों? नो क्वेश्चंस? तो बच्चों आप सब लोग एनवायरनमेंट के बारे में ख्याल रखते हुए, बट नॉट जस्ट पानी, एयर, वाटर, सॉलिड वेस्ट, सब कुछ एनवायरनमेंट में सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना पड़ेगा. ठीक है बच्चों? Thank you, sir. Exactly Siddhi Singh. That's what is happening in the
coastal areas. Yes. And I thank the Delhi government for giving me this opportunity to interact with the students. Thank you, everyone. Thank you so much, sir, for interacting with these kids and giving them insights about groundwater. Thank you so much. Okay, so we move on to our final speaker, Dr. Ranjana Ray Chaudhary. She is an assistant professor in Terry School of Advanced Studies, and she will be talking to you about groundwater footprint of urban India. And Ranjana, please unmute yourself. Can you hear me? Yes, ma'am. You can hear you now. Okay, great. So I'll share my screen. So बच्चों, thank you. आप morning से यहाँ पे बैठे हैं और हमारी बातें सुन रहे हैं, which is really very good. और जैसे आपको बाकी सर्स ने बताया, वैसे मैं भी अभी बताने वाली हूँ आपको कुछ थोड़ा सा different. And आपको अब हमारा screen दिख रहा है? Groundwater footprint. Yes, ma'am, we can hear. You can see? Okay, great. So बहुत सारी चीजें हैं जो आपको सर्स ने बताया और हम भी बताएंगे. तो मैं टेरी स्कूल ऑफ एडवांस स्टडीज में डिपार्टमेंट ऑफ रीजनल वाटर स्टडीज में पढ़ाती हूँ. मैं प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर हूँ. आपसे बड़े बच्चों को पढ़ाती हूँ MSc और MTech लेवल पे, पर वो भी वाटर समझना चाहते हैं. तो आप अभी से आपकी जर्नी आपने शुरू किया है और आगे तक आप वाटर के बारे में आपको समझना पड़ेगा. छोटी छोटी बातें हैं. पहले हम सोचते हैं कि ये नहीं चाहिए, ये हम पढ़ के क्या करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका नॉलेज बेस बढ़ता है आपको पता लगता है कि अच्छा हम यहाँ पे हम भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं. तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि ग्राउंड वाटर क्यों यूज होता है, अब आप देखिए जो ये रेड एरियाज है, आप सबने मैप ऑफ इंडिया देखा है, आपकी ज्योग्राफी क्लासेस में आप देखते भी हैं. तो कुछ जगह ऐसे हैं हमारे देश में, जैसे राजस्थान की बात कर रहे थे सर पहले, तो जहाँ पे नदी कम है, तो वो एरियाज है जहाँ पे आप ये रेड कलर देखेंगे, मतलब बहुत ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज होता है. लेकिन वहाँ पे ग्राउंड वाटर भी इतना नहीं है. अगर नदी नहीं है तो ग्राउंड वाटर भी इतना नहीं है. तो ये रेड वाले ओवर एक्सप्लॉइटेड एरियाज है. हमारे दिल्ली, गुड़गांव, फरीदाबाद, यहाँ भी ग्राउंड वाटर एक्सप्लॉइटेशन काफी रहा है पहले. और जो येलो एरियाज है ये क्रिटिकल एरियाज है, मतलब यहाँ पे पानी ग्राउंड वाटर सिर्फ रेड वाले लोकेलिटी से कम यूज होता है. और कुछ ब्लू एरियाज है जहाँ पे सेमी क्रिटिकल है, मतलब यहाँ भी ग्राउंड वाटर ज्यादा यूज होता है. और ये सारी ऐसी जगह है जहाँ पे नदी इतना नहीं है. और ग्रीन एरियाज जहाँ पे पानी सलाइन है. तो कोस्टल एरियाज में तो सलाइन वाटर का प्रॉब्लम है ही, लेकिन कुछ एरियाज गुजरात, राजस्थान में ज्यादा है जहाँ पे सलाइन भी वाटर, सलाइन का मतलब है वो नमकीन पानी है, वो अपना फ्रेश वाटर नहीं है. और हिल एरियाज में अभी हमने इतनी डिटेल में स्टडी नहीं किया है. ये ग्राउंड वाटर, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का मैप है. अब अगर इस मैप को आप बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं और इस पे अगर हम ये वाला मैप सुपर इम्पोज करें तो हमें क्या दिखता है? ऑल आवर बिग सिटीज. अब आप देखिए पॉपुलेशन ऑफ ग्रेटर देन 5 मिलियन. आपको मालूम है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, ये सब बहुत बड़े शहर हैं. बट इसमें जहां आपने सुना कि वेस्ट बंगाल में आर्सेनिक का प्रॉब्लम है, वैसे दिल्ली और जयपुर में पानी कम है. क्योंकि अगर आप इस मैप को इस वाले मैप से कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि हम रेड जोन में बैठे हैं ऑलरेडी. और फिर यहाँ पे अगर हम अहमदाबाद देखें और ये बाकी जो छोटे शहर है, जयपुर है जो कि दिल्ली से छोटा है लेकिन वैसे बहुत बड़ा शहर है, ये सारे उस रेड जोन्स में है. मतलब ये फार्मर्स को तो तकलीफ हो ही रही है कि उनके पास ग्राउंड वाटर की कमी है और देयर इज कंटामिनेशन, बट शहरों में भी हमारा ग्राउंड वाटर धीरे धीरे कम हो रहा है. और जब हम देखते हैं कि हमारी सिटीज में लोग ऑलरेडी इतना है और भी आगे बढ़ेंगे, इट विल गो अप टू 600 मिलियन. तो हालांकि आपको, हम सबको क्या है, हम पानी टैप से मिलता है, मतलब हमने नल खोला और हमारे यहाँ पानी है. वो कहाँ से आ रहा है हम इतना नहीं सोचते हैं, लेकिन पानी ग्राउंड वाटर से भी आता है और नदी से भी आता है. तो शहरों में पानी जनरली हम कोशिश करते हैं रिवर्स से लेने के लिए. जैसे शुरू में सर पूछ रहे थे कि आप यमुना जी गए हैं, तो आपको मालूम होगा कि यमुना जी से हमें पानी मिलता है.
लेकिन हम ग्राउंड वाटर भी लेते हैं दिल्ली में। सो ये सारे जो आप कई सारे बड़े शहर, अगर आप साउथ में देखें, चेन्नई, बैंगलोर, ये भी सारे उस रेड जोन में आते हैं। तो पहले क्या था हमारे देश में, ऐसा क्यों हुआ कि हम ग्राउंड वाटर इतना यूज करने लगे, जबकि हमारे पास नदी का भी पानी है कई शहरों में। तो जब हम छोटे शहरों में रहते थे तब पानी हम ग्राउंड वाटर यूज करते थे, सबके घर में कुआं हुआ करता था और उसमें से पानी निकालते थे। तो धीरे धीरे जब हमारे पास डैम से, रेजर्वायर से पानी आने लगा, तो वो आप इस ब्लू लाइन से देख सकते हैं कि वो धीरे धीरे हमें ज्यादा पानी मिलने लगा फ्रॉम द रिवर। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमने अपना ग्राउंड वाटर कंजम्पशन कम किया, हम फिर भी अपने जब हमारे डग वेल्स उनमें से पानी नहीं, कुआं में से पानी नहीं मिलता था, तो हम बोरवेल से पानी लेने लगे। तो देर इज अ कॉन्स्टेंट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर। लेकिन जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज की आज हम बात करते हैं, कि अगर हम धरती से पानी निकाल रहे हैं तो धरती को पानी वापस भी तो देना है, लेकिन कैसे दे ये पानी, शहरों में स्पेशली हम ये पानी कैसे दे, वो हमको सोचना पड़ेगा। तो आप ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, तो हम ये अंदाजा लगा रहे हैं इन फ्यूचर, क्योंकि आजकल क्लाइमेट चेंज से क्या होगा, दुनिया में क्या चेंज आएगा क्लाइमेट चेंज की वजह से। जैसे आज आपको शायद पता हो कि मार्च के महीने में नॉर्मली टेम्परेचर्स इतनी हाई नहीं जाती हैं दिल्ली में, लेकिन ऑलरेडी टेम्परेचर काफी हाई है। तो अगर ऐसा रहेगा तो ग्राउंड वाटर का क्या सिचुएशन रहेगा? क्या ग्राउंड वाटर ऐसे ही कांस्टेंट हम यूज कर पाएंगे, या ग्राउंड वाटर डिप्लीशन हो जाएगा, तो हमारे पास ग्राउंड वाटर नहीं होगा, या हम ग्राउंड वाटर को बढ़ा सकते हैं? तो ये सब हमें सोचना पड़ेगा। और आप सब गूगल मैप देखते हैं, गूगल में देखते हैं कि कैसे किस डायरेक्शन को फॉलो करें। तो ये मैं आपको गुड़गांव दिखा रही हूँ। इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ ही जगह है जो एम्प्टी है, जहाँ ग्रीनरी है, ये अरावलीज है। आप लोग जो गुड़गांव में रहते हैं या गए हैं, आपको मालूम होगा, एक छोटा सा रिज एरिया है, और बाकी सब देखिए ये सारे बिल्डिंग्स हैं। तो ग्राउंड वाटर रिचार्ज, अगर हम धरती को वापस रेनफॉल से देना चाहते हैं पानी, तो कैसे दे? ऑलरेडी तो इतना हमने कवर कर लिया है विद बिल्डिंग्स, तो हम क्या कर सकते हैं? और कुछ चीजें आप सब भी जानते हैं कि जैसे दिल्ली में बरसात होती है, देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैफिक जैम। क्यों? क्योंकि रोड्स पे पानी इकट्ठा हो जाता है। क्या इसका कोई ग्राउंड वाटर से कनेक्शन है? ऐसा है कि क्योंकि हम ग्राउंड वाटर नहीं फिलअप कर पा रहे हैं, इसलिए इन रोड्स पे पानी आ गया है? तो हमने ये छोटा सा स्टडी किया था गोल्फ कोर्स रोड पे गुड़गांव पे, और हमने देखा जो अपस्ट्रीम में जो क्रीक्स हैं, वहाँ जो जहां से पानी आता है वो सारा ब्लॉक हो गया था। आप ये नीचे वाले फोटोग्राफ्स देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि उसमें हमने कूड़ा डाला हुआ है, प्लास्टिक वेस्ट है, फिर जो कंस्ट्रक्शन डेब्री है, वो सब जाके हम वहां पे डाल देते हैं। तो पानी जो है वो वहां पे नहीं ठहर पाता है, इसलिए वो जल्दी से रोड पे आ जाता है, क्योंकि उसको फिर बरसात को ना रोड फिर नदी लगने लगती है, तो वहां से जल्दी जल्दी बहने लगता है, और ऐसे राउंड अबाउट सारे पानी से भर जाते हैं। लेकिन अगर हमने उसी पानी को एक छोटा सा यहाँ पे रिचार्ज पॉन्ड बनाया, तो हम पानी को ये जो आप येलो और पिंक वाला रोड देख रहे हैं ना, हमने यहाँ पे पानी को आने ही नहीं दिया। हमने उससे पहले ही हमने GMDA है, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी, उनको ये सजेशन दिया था। तो उन्होंने हमारा सजेशन लिया और लेके ऐसे रिचार्ज पॉन्ड्स बनाए, जो ये थोड़ा बहुत भी खाली जगह आपको दिख रहा है, और उस वजह से पानी वहां रुकने लगा। और फिर आप देखिए अगस्त 2020 में ऐसे वाटर लॉगिंग हो गया था, लेकिन 2021 में सेम जगह पे पानी वाटर लॉगिंग नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने ये पॉन्ड्स बनाए। अब ये पॉन्ड्स बनाने से ग्राउंड वाटर को क्या फायदा मिलता है, वो अब हम समझेंगे। तो ये भी थोड़ा बहुत आपके ज्योग्राफी में आप पढ़ते हैं कि पहले तो पानी को रोकना है, जब बरसात हो रहा है तो पानी को पहले रोकना है। तो डिटेंशन, फिर रिटेंशन क्या है, कितनी देर रोके, पानी कितनी देर ठहरना चाहिए, और जब ये पानी ठहरेगा तभी इन्फिल्ट्रेशन होगा। तो ये जो हम बार बार कह रहे हैं ना कि ग्राउंड वाटर इनविजिबल है, हमको ग्राउंड वाटर नहीं दिखता है, लेकिन एक्चुअली जो अनकन्फाइंड एक्वेफर है, जो शैलो एक्वेफर है, वहां पे पानी ऊपर से ही, जमीन से ही नीचे धीरे धीरे सॉइल के अंदर से इन्फिल्ट्रेट होते हुए ग्राउंड वाटर रिचार्ज करता है। इसीलिए हम बहुत जरूरी है कि हम ऐसे ओपन स्पेसेस फिर से क्रिएट करें, जो कि
पहले हुआ करता था, लेकिन शहरों में अब नहीं होता है क्योंकि हमने इतने सारे बिल्डिंग्स बनाए हैं। इसलिए इनको नए तरीके से फिर से दोबारा बनाना है। और फिर से मैं एक और डायग्राम आपको दिखा रही हूँ, ये बताने के लिए कि पहले जो था ग्राउंड वाटर आसानी से नीचे जाता था, शैलो इन्फिल्ट्रेशन और डीप इन्फिल्ट्रेशन हुआ करता था, सिर्फ 10% रन ऑफ था। तो जब बरसात होती थी तो ये जो ट्रैफिक जैम होता है बिकॉज ऑफ फ्लडिंग, वाटर लॉगिंग, ये कम होता था। और ग्रीन कवर था तो 40% इवेपो ट्रांसपिरेशन हो जाता था। लेकिन अब क्या है, क्योंकि हमने सारे ये पेड़ पौधे काट दिए हैं तो इवेपोट्रांसपिरेशन भी कम हो गया, अब 40% की जगह 30% हो गया। और ये जो आप रन ऑफ देख रहे हैं 10%, वो 55% हो गया है। तो अब जब इतना पानी बहेगा ऊपर, तो वो तो जाके कहीं ना कहीं वाटर लॉगिंग, फ्लडिंग करने ही वाला है। और क्योंकि हमने यहाँ पे कंक्रीट की बिल्डिंग्स बनाई है, नीचे जो इन्फिल्ट्रेशन होके ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो भी कम होने लगा। तो इसी वजह से हम पानी ज्यादा निकालने लगे और धीरे धीरे रिचार्ज लेकिन कम होता गया। तो ये अनसस्टेनेबल है। अनसस्टेनेबल का मतलब है कि हम कितनी देर कर सकते हैं, धरती कितनी देर हमको पानी दे सकती है। अगर आप ये सोचें कि ये टैंक जैसा है, तो जब हम रोज सवेरे पंप चलाते हैं, जिनके घर में टैंक्स हैं, और टैंक को ऊपर भरते हैं, तभी तो सारा दिन पानी मिलता है। लेकिन अगर हमने धरती के नीचे जो हमारा बड़ा सा टैंक है, जो जिसको हम ग्राउंड वाटर बोलते हैं, उसको भरते ही नहीं है, लेकिन उसमें से बार बार हम पानी लेते रहते हैं, तो अगर ऐसा करेंगे तो वो पानी नहीं रह सकता है। तो हमको ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना पड़ेगा, नहीं तो ये स्कैसिटी ज्यादा हो जाएगा। और आपने सुना अभी चिंतला सर और उससे पहले सुरेश बाबू सर और चिन्नस्वामी सर भी बता रहे थे कि देयर इज पोल्यूशन ऑल्सो। पोल्यूशन का ये मतलब है कि जो मैंने आपको कहा कि अगर ये जो हमने आपको दिखाया ना कि हमने यहाँ पे पानी इकट्ठा किया एक पॉन्ड में, एक लेक में, अब यहाँ पे आप सोचिए अगर फिर से वेस्ट आ जाता है, फिर से सीवेज वाटर आ जाता है, तो क्या फायदा है इस पानी को वहां पे इकट्ठा करने का। वो फिर धीरे धीरे फिर से पोल्यूशन को बढ़ाएगी ग्राउंड वाटर में, जब ये धीरे धीरे नीचे जाएगा। तो ये भी हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो हमको ये जरूरी है कि हम क्लीन वाटर उस पॉन्ड में इकट्ठा करें। तो यहाँ पे मैंने एक थर्मोमीटर टाइप बनाने के आपको बताने की कोशिश की है कि अगर हमने 40% पानी, अगर मान लीजिए हमारे पास हमारी टंकी जो है ग्राउंड वाटर की वो 100 लीटर्स की है, तो उसमें से सिर्फ 40 हमको यूज करना चाहिए बार बार, क्योंकि हर साल बरसात सेम नहीं होती है। तो और हम और भी डीप जा रहे हैं, कन्फाइंड एक्विफर से पानी ले रहे हैं, जिसका कि हम रिचार्ज दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकते हैं या गुड़गांव में बैठ के नहीं कर सकते। वो पानी पहाड़ों से आ रहा है, वहां पे रिचार्ज होना है। और दूसरा, यहाँ पे अगर हम ग्रे वाटर, अभी हमने ग्रे लिखा है, हमने ब्लैक नहीं लिखा है, ये अगर पोल्यूशन बढ़ता गया तो हर साल पोल्यूटेड वाटर का क्वांटिटी बढ़ जाता है पॉन्ड्स में, लेक्स में, और जो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ ब्लू वाटर है, जो कि साफ पानी है, वो फिर कम रहता है। तो इस वजह से पोल्यूशन बढ़ जाता है। तो अगर हमने हमने शुरू में जयचंद्रन सर भी आपको बता रहे थे कि हम वेटलैंड्स की मैपिंग कर रहे हैं, लेक्स की मैपिंग कर रहे हैं, हम वहाँ पे पानी साफ आ रहा है कि नहीं वो सब भी देखेंगे। तो उसमें क्या होगा, अगर बहुत ज्यादा गंदा होगा तो उसको साफ करने में भी उतना ही टाइम लगेगा। ये नहीं है कि आज हमने शुरू किया तो कल हमें साफ पानी दिखेगा। वो प्रोसेस बहुत स्लो होता है, धीरे धीरे होता है, और यहाँ पे सब मिल के काम करेंगे। और ये क्यों चाहिए होता है, नहीं तो अगर हमारी जो वैनिशिंग लेक्स की हम बात कर रहे हैं और ग्राउंड वाटर लेवल जो नीचे जा रहा है वो और नीचे चला जाता रहेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हमारे शहरों में आजकल अर्बन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं। आप सब गार्डन्स में जब जाते हैं, पार्क में खेलने जाते हैं, आपको कितना अच्छा लगता है। तो वो ग्रीनरी हमें चाहिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें अच्छा लगता है वहां खेलना या वहां पे घूमना, बट उसके साथ ये भी है कि वो जो सॉइल है, उसी सॉइल से नीचे पानी जा रहा है और ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो सकता है। इसीलिए जो सिटी डिस्ट्रिक्ट पार्क्स है, अर्बन फॉरेस्ट है, अर्बन लेक्स है, ये सब हमारा अपना है। तो हमें वहां पे जाना है, घूमना है। अगर ज्यादा लोग वहां जाएंगे तो लोग, ये जो पोल्यूशन होता है ना कि ड्रेन से हमने पानी लेक में डाल दिया, ये सब भी कम होने लगेगा। क्योंकि जब हम पूछेंगे कि क्यों ऐसा कर रहे हैं, कौन ऐसा कर रहा है, तो फिर खुद से हम सोचेंगे कि हम भी कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हैं। क्योंकि हमें पता ही नहीं कि वेस्ट वाटर वहां जा रहा है। अगर हमें पता लगेगा तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि वेस्ट वाटर वहां नहीं जाए, कैसे वो ट्रीट करें। तो जो हम कहते हैं आजकल कि वेस्ट वाटर को
अपने यहाँ लोकली उसको ट्रीट करके उसको हम ड्रेन में जितना कम जाने देंगे उतना अच्छा होगा। तो जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं, नई अपार्टमेंट्स बन रही हैं, स्पेशली बैंगलोर में, चेन्नई में, उनको कहा जाता है कि आप अपना वेस्ट वाटर ड्रेन से बाहर न फेंके, उसको ट्रीट करें अपने वहीं, और वहीं पे जो लोकल गार्डन है उसमें यूज करिए। ये इसी अगर हम ये सब करते रहे 3 साल, 4 साल, 5 साल, तभी जाके अपना ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ेगा। So thank you very much, बच्चों, for listening to me. I hope you liked it. Thank you. And thank you especially to all to the department. Thank you so much, ma'am. Welcome. Students, if you have any questions, if you want to ask anything, ma'am से कुछ भी आपको और पूछना। बहुत देर से सुन रहे हैं बच्चे, लेकिन you're most welcome to ask me. And the Chavi is asking relation between consumption and water use. Relation between? Consumption and water use. जब हम इरिगेशन में या एग्रीकल्चर में इसको यूज करते हैं, इट मीन्स द सेम थिंग। इट इज द कंजम्पशन ऑफ वाटर इज द वाटर यूज। कि मान लीजिए हम व्हीट ग्रो कर रहे हैं, शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, तो जितना हम ग्रो कर रहे हैं उसके लिए ये कंजम्पशन है, सो इसलिए इतना वाटर यूज होगा। देयर इज कंजम्पटिव यूज एक्चुअली टर्म यूज होता है। Did I answer the question? Yes, ma'am. Yes. Okay, great. Thank you. Is there any other questions? किसी को भी कुछ भी पूछना हो आप पूछ सकते हो। I can feel your question, ma'am. Thank you so much for taking out the Most time welcome. and guiding the students regarding how to evaluate a groundwater. The initiative that you've taken in Gurgaon is also commendable. Thank you so much, ma'am. Most welcome. Thank you. Thank you for inviting me. A pleasure to talk to children. बहुत अच्छा लगा. Thank you so much. So now we have a panel discussion, open discussion with all students and all the panelists. Ranjana ma'am, you are present, and Suresh sir, are you there? Okay, I think so. Students, if you have any question and if you want to discuss anything, हाँ करो ना, देखो 2 बजे को मांग रहे हैं ना अभी। so we will have an open discussion. Can you all please record the video? ऐसे स्टेशन पे पहुंचते हैं। सारे स्टूडेंट्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि अपना वीडियो ऑन करें। They could have been directly provided for us so that we can have a little interaction with them. हमारी पढ़ाई का टीम है, उनमें से आज तो कल से ये ऐसे अरेंज कर लेंगे। दिक्कत नहीं ओके, तो आपको आज इन सारे सेशंस में से क्या बेसिकली नॉलेज गाड़ी क्या कहाँ दिक्कत आई? Anyone who would like to answer किसी को क्या आज अच्छा लगा, क्या समझ आया? डीएम का ऑफिस ही रहता है जनरली, तो मेरा क्या सीखा आपने? आसपास ही रहता है। तो इस वक्त नहीं है, आपका जो ट्रेनिंग्स को भी आप उसके साथ घर के पास में हमारे ट्रेनिंग्स को भी डाल सकते हैं। More students can switch on the video. आकांक्षा, आयुष, अनन्या, क्योंकि 12 ट्रेनिंग्स को लेके जाना चाहिए। अर्श, नहीं 12 अपने एक ही दिन में अलग अलग वहाँ पे भेज होगा ना डिस्ट्रिक्ट में।
Anushka, would you like? लेकिन कुछ पैसे वाले तो नहीं लगना है। एक हमारे बच्चे को पढ़े कॉलेज पर हो जाके ग्रिड प्रॉब्लम बनाए वही है ना। हाँ, लेकिन मतलब वही है। प्रॉब्लम जो आ रही है जैसे कल और You can unmute yourself and answer. और उस टाइम पे वो जो ऑफिसर था Ma'am, I want to say that we learned ways to conserve groundwater, and also what will happen if we do not take good care of the groundwater, like salt water, sea water will come inside the groundwater and pollute it. And we also learned how the water quality is, like the quality of water in our country, like it's not so good, and we have to protect the groundwater to make sure that in the near future all the future generations get to have a nice um have like pure water to drink and be safe and not be prone to diseases, waterborne diseases. Very nicely said, Anushka. यहाँ से बहुत उसमें भी क्या चाहिए कि एक गाड़ी में Okay. Anyone else who wants to answer, wants to give you feedback or say anything that we are sharing out? Okay, I think all of you are overwhelmed. So we'll take a short break and then we have the quiz at around 1 p.m. Till then, we'll just shortly start the quiz in 5 or 10 minutes. Just wait till that time. तो same type का ही And thank you, Ranjana ma'am, and thank you, Suresh sir, for taking out your valuable time and writing us. Thank you so much for your kind cooperation throughout the event. Thank you. Thank you. Bye-bye. A pleasure. Anushka, you are in which school? Ma'am, Navy Children's School. Sorry? Ma'am, Navy Children's School, Chanakyapuri. Okay. Right, quiz nahi karenge. Which other schools do we have present here? Can you just write in the chat box which all schools do we have here? Because we'll need that in the quiz to mark you. All the schools that are present, please write your names in the chat box. If you want to ask anything, you can write in the chat box or unmute you. We'll start the quiz in 5-7 minutes. बाहर
के बैठ के पढ़ना पड़ता है। एक अलग तो निकाल लिखते हैं। और अपने जो है पहले पहले कर देते हैं। पढ़ो इसको ना। एंड इसका एक प्रेजेंटेशन टाइम है 29 आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट है, प्लीज अपने स्कूल का नाम या कॉलेज का नाम यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखें। कब आ गए? हेलो एवरीबॉडी। हम लोगों ने कॉम्पिटिशन्स भी रखे थे, पोस्टर मेकिंग, स्लोगन राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग। किस किस ने पार्टिसिपेट करा? प्लीज अपने हैंड रेज कीजिए। आप सबको वो इन्फॉर्मेशन मिला तो होगा ना? सभी शहर, I can see only one hand which is raised. Senior scientist. कौन है? Hello सभी। सिर्फ एक स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया और किसी ने पार्टिसिपेट नहीं किया। अभी भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, आप अपनी एंट्रीज भेज सकते हो। पोस्टर मेकिंग है, पेंटिंग कंपटीशन है, स्पोकन राइटिंग है, आर्टिकल राइटिंग है, फोटोग्राफी। आपको आसपास अपने कनिका रावत ने भी पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच। आपको अपने आसपास कोई वेटलैंड दिखे या कोई वाटर बॉडी दिखे या कुछ भी पानी से रिलेटेड दिखे, आप उसका फोटो खींचिए और हमें भेजिए। We can see 4 or 5. That is like 10 hands raised right now. Thank you so much everybody for participating. मैं सबको encourage करूँगी कि आप भी सब लोग please participate कीजिएगा. We still have our entries for 1 week, and after 1 week we'll disclose the results about the best positions. We have received names of only 3 schools. और कोई स्कूल है यहाँ पे या कॉलेज के कोई स्टूडेंट? Okay, we have received your answer regarding participation. जिसने participate नहीं करा है वो अभी भी कर सकता है. You can contact your school. You can participate in poster making, article writing, slogan writing, and just a minute video. Yuna, are you there? I'm unmuting you. हमको आपका आर्टिकल और वीडियो नहीं रिसीव हुआ है. Can you tell us where have you sent it?
इन्फॉर्मेशन का कॉस्टिंग एक्स्ट्रा कुछ कहते हैं क्या? Okay, so we will be starting with the quiz now. Are you all ready? Okay. So we have Anita Mani from Delhi Bird Foundation. She is a member of Delhi Bird Foundation, and she will be holding the quiz. And it is related to. We will have some questions regarding birds and groundwater. I'll just allow her to share. Thank you, Snigdha, and good afternoon to all of you. I represent Delhi Bird Foundation. We are a bird watching society that's based out of Delhi, though we have members from across the country. And as our name suggests, we are a bird watching club. We have bird walks and workshops that happen very frequently. Walks happen every weekend. Workshops, presentations, and seminars do happen as well. We conduct walks and talks for schools, and yeah, and we are blessed to live in Delhi, which has some wonderful wetlands where we can see the most amazing kinds of birds. And in keeping with the theme of today's quiz, we are doing a quiz on groundwater and water birds and water animals. So the connecting theme is water. So I'm guessing that you're all ready to go. Yes? Is all ready? Will we start the quiz? rules तो बोल दो कि क्या हाँ, email आप एक बार email बताइए, इन्होंने भेजा है। Okay, ma'am, we can start. We can start. Okay, I'm just going to run the presentation now. Yeah. Are you able to see the screen?
Yes, ma'am, we can see the screen. Yes, just a minute. Okay, all right. Let me start by clarifying the rules. There are 15 questions in this quiz, and each question is a multiple choice question, which means you have mostly you have 4. I think one question has 3 choices. There is only one correct answer, and the time given to answer each question is 10 seconds. So the minute I finish reading out the question and the choices, I will start the timer, and once 10 seconds is up, I will simply say time up, and within those 10 seconds, you'll have to type in your answers into the chat box. The scoring is really simple. It's fastest fingers first, which means the team that types in the first correct answer in the chat box gets the points. That team gets the points. So you have to be quick to be able to type in your answer into the chat box. And your answer can only be one of those 4 choices present on the screen. You can't come up with a 5th choice. So you also have to be careful about that. Some questions are tricky, so read the answers carefully. And once the time is up, you cannot type in your answers for that question anymore. And as usual, the team with the most points will win. Each correct answer carries 5 points. So if you are a team that is absolutely brilliant and gets all 15 questions correct, you could technically earn 75 points, but I'm hoping there's going to be much more competition than that. And there is no negative marking, so please type in an answer. Even if you're not sure, make a guess. You might just be right. There's a 1 in 4 probability that you are right, so make that guess. Okay? All right. So I'm going to start with the first question, but before that, are there any questions about the rules? Please ask now. Okay, I think there was only one question, whether we have to type the answers in the chat box. Yes, you have to type your answers in the general Yes, chat box. Yeah. You have to write in the chat box. Is that all right? Okay. All right. So can we get started? Any more? I'm assuming there are no other questions, so we can jump into the first question of the quiz. Okay, everyone, look sharp. Okay. Okay. The first question is, what are the 2 biggest uses of groundwater in India? And your choices are irrigation, power generation, agriculture, and the 4th choice is irrigation and agriculture. Your time starts. Okay, time's up. And we go to the next question. What percentage of the world's fresh water comes from groundwater? And the answer choices are 50%, 30%, 10%, and 90%. Time starts. Okay, time's up. Just a second, I want to make something clear. Please write the answer and not A, B, C, D. Write the full answer. All right? Okay. Don't write the option number, just write the answer. Yes. Okay. Shall I go on, Snigdha? Yes, ma'am. Okay. Continue. Okay, question number 3 coming up. The largest ocean on the earth is Pacific, Atlantic, Southern, or Indian? Starts now. Okay, time's up. We go to question number 4. What percentage of water on earth is salt water? Is it 21, 40, 97, or 75%? Time starts.
Okay, time up. We are going to the next question. Snow, sleet, hail, rain. Now we've seen some of these in Delhi. Other than sleet and snow, I think we've seen the rest. Are examples of what? Accumulation, evaporation, precipitation, or condensation? Okay, time's up. We are 1/3 of our way through the quiz. I hope you're looking sharp. We are now going to ask you, what is water doing when it changes to water vapor? This is a really easy one. Is it condensing, precipitating, transpiring, or evaporating? All right, time's up. What is the next stage in the water cycle after evaporation? Is it freezing, accumulation, condensation, or transpiration? Okay, time is up and we go to the next question. Now we're going to go on to the questions that have now about nature, about birds and animals, but still connected to water. So we are entering the second part of the quiz now. So I'm going to call out the 8th question, which is, which type of animals begin their life in the water and breathe through gills and come out onto land and breathe again through lungs as adults? Is it fish, mammals, reptiles, or amphibians? Starts now. I also want to say one thing here, that if teams change their answers, your first answer will be taken as your answer. Because everybody's putting their answers out into the comment chat, we can't have you correcting your answer. Okay. All right. We go to question number 9. Some insects can walk on water, and why is that? Are they very light? Do they use surface tension, or do they run very fast? Starts. All right, time's up. Next question. These animals are famous for building dams in small rivers and streams. What are they? Are they beavers, seals, otters, or turtles? Starts. Okay, last 5 questions coming up. 11th question. The largest water animal is the walrus, humpback whale, blue whale, or sea snake? Okay, next question. The largest living fish is the whale shark, great white shark, basking shark, or megalodon? Okay, question 13 coming up. Which insect lives most of its life in fresh water, comes out of the water with wings as an adult, and dies in a single day? Damselfly, mayfly, dragonfly, or housefly? Okay, next question. Which type of animal found on the Galapagos Islands, which are off the coast of South America, sneezes out extra salt? Is it the marine iguana, the Galapagos tortoise, the green sea turtle, or is it the seal? Okay, questions are getting a little tougher now, but we hope you're keeping up. And your time is up for this question. And the very last question. When people grow vegetables with only water, what is it called? Hydrophobia,
Hydroplantia, hydroponics, or hydroelectricity? All right, so time is up and those 15 questions are over. It went by really fast. So we're just going to give the team is going to check who scored the most, and while we discuss the answers to the quiz. All right, so how did you find the quiz, everyone? Did you find it interesting? Thank you, ma'am. So will you be discussing the answers while I score them? Yes, we will be doing that. Yeah. 1 second, please. I'm just going to turn the share back again to show you the answers. All right. Okay, just give me a minute. Okay, can you see my screen again? Yes, ma'am. We can see us. Hold on. Yeah. Okay, so can we go on to discuss the answers? And before that, any questions from anybody on the quiz? Okay, somebody said the quiz was really hard. Okay. Yeah. Some found it easy, some found it interesting, some found it fun and interactive. Okay, all right. So I'm figuring that most of you had fun. Now let's see. Now you'll figure out for yourselves who got what right. Okay, so we're going to go through the answers now and learn a little bit more about some of the questions that we put up for you in the quiz. The important thing about doing a quiz is not about just getting it right. It's really about getting a lot of new information. It's about learning interesting things, picking up some trivia. It's really about that rather than just about getting all the answers right. Okay, in that spirit, let's just look at what the answers were. Okay, all right. The biggest use of groundwater in India is irrigation and agriculture. About 60% of irrigated agriculture and 85% of our water supply is dependent on groundwater. That's a lot, which is why in areas with low water tables, you have a lot of issues for people in cities as well as farmers in fields. So that is the connection. Question 2, what percentage of the world's fresh water comes from groundwater? And that's a whopping 30%. The remaining 70% is in ice caps and mountain snow, glaciers. Just 1% is in rivers and lakes. So a lot of the water that is visible to us is not really the biggest source of our water. It's really only the groundwater that we don't see, which is the source of our water supply. Okay, and groundwater supplies half of the world's drinking water. That's really a lot, which goes to tell you how very important it is to conserve groundwater. This is the easiest question I thought in the quiz. The largest ocean on earth is the Pacific. I think you've been learning this since class 3, so I suspect all of you got this right. Now, what percentage of the earth is salt water? And again, it's an awful lot. And you can see in the table, like 97% is salt water. And from the 3% fresh water, we have, our groundwater is 30% of that 3%, or about 1% of the overall whole. But the bulk of our water is salt water. And I suspect many of you got that right as well. And again, easy question. Snow, sleet, hail, rain are all examples of precipitation, and most groundwater comes from such precipitation. It's an important stage in the water cycle. What is water doing when it changes into water vapor? Obviously, it's evaporating, and I think most of you would have got this right as well.
And the next stage in the water cycle is, after evaporation, is obviously condensation. So as you can see, groundwater is a part of the water cycle. You have to understand it in the context of where water is moving over the course of days, months, and seasons. Now the interesting animal questions, they were, I thought, slightly more difficult, but I'm hoping that many of you applied your smarts and figured out and made smart guesses. Okay. Question 8. Now we asked you which type of animals begin their life in water. They breathe through gills, but they come out onto land, which means they're like two-way superstars, and then they continue to breathe through the lungs when they grow up. And these, as you can see from the photo, are amphibians. A fascinating and less read about, less talked about group of animals, but with incredible diversity. And many amphibians in India continue to remain undiscovered. So a lot of the new discoveries in wildlife in India are coming from amphibians, are coming from amphibian discoveries. Yeah. And which insects work on water? It's because of a physical force called surface tension. And this you can see anywhere. Wherever you see a lake or a small water body, you will see insects doing this funny kind of surface dance on the water. It's fascinating to watch, and there's some very, very strong physical forces which is linked to surface tension at work to help them to support their weight on water. Beavers are the animals that are famous for building dams, and beavers, I mean, this causes a lot of problems because it can stop the flow of water, but they are an important part of our of the world's ecosystem, and they are like architects. I mean, just look at that dam in front of you. I mean, look at the intricacy, look at the size of the animal and look at the size of the dam. It tells you the kind of work that animals do to, as part of their natural evolution. Okay, I find this absolutely fascinating. And question 10 was easy again. The largest water animal is the blue whale. And we all think the blue whale is in some faraway ocean somewhere, but the fact is, in between December and March each year, these huge creatures visit the coast of India. In fact, they're actually off the coast of Sri Lanka. And in just about 40 minutes or 1 hour from the coast of Sri Lanka, if you get into a boat, you have a very, very good chance of seeing a blue whale. And when you see them, you realize how enormous they are. I mean, they're much, much bigger than any video can show you or your imagination can tell you. I mean, they're incredibly large. The largest living fish, by contrary, is the whale shark. And although it says whale shark, the fact is genetically, they're completely unrelated to whales. So don't ask me why they're called whale sharks, but it's very misleading. But yes, they're whale sharks, but they have nothing to do with whales. Okay, this was a slightly more tougher question, which was about which insect lives most of its life in fresh water, comes out of the water with wings as an adult, and dies in a single day. The answer was the mayfly. Many of these adults emerge in the month of May in summer, which is where the name comes from. And it's interesting. I mean, some farmers and gardeners see them as pests, while a lot of others were others in some countries, they are actually collected and they are cooked and they're eaten because they have a lot of protein in their bodies. So yeah, so look at the cultures. I mean, some cultures see them as pests, some see them as food, but they are fascinating anyway. Okay, which type of animal is found on the Galapagos Islands, which is again off the coast of South America, sneezes out extra salt? Yeah, okay. So excess salt, this is the marine iguana, and this is an absolutely fascinating animal. Like a lot of animals in the Galapagos, this is endemic. Endemic means that they are found there and nowhere else. And these iguanas, when they feed underwater, they take in a lot of salt water. Now, they have to keep the water in, but not the salt. So how do they chuck the salt out? So they have these special glands that just remove salt from their blood and they expel it out of their bodies. Interesting as it is, plants do have the same adaptation. There are plants which live in highly saline areas like mangroves. Like if you've seen mangroves near Calcutta or mangroves near the coast, these plants also have, some species of mangroves also have these salt glands that extrude the salt out of their bodies, and you can see the salt coating their leaves. Look at, this is all adaptations to live in highly saline environments.
And the final question was easy. We have, when we grow vegetable in water, it's called hydroponics. You have now, it's becoming more common, and people are selling vegetables like tomatoes and bangan and those kind, and even greens like palak and methi, grown purely hydroponically. Okay. So that brings me to the end of the discussion on the answers. And I will ask Snigdha, are you ready, Snigdha, to announce who was the winner of this quiz? Yes, we are ready with the answers. Okay, so Alright. there was a competition. Yes, Snigdha, would you like We to have- announce the winner? Yeah. So we have the top three with us. The quiz, the winner is Ananya Jain, followed by Riju Rawat, and then Divyanshi Singh. So these are the top three that we have selected. And congratulations, Ananya, Rijul, and Divyanshi. We would like to know the name of your schools from firstly. Please write in the chat box the name of the school. Ananya, Rijul, and Divyanshi. Congratulations to you all. Please write the name of the school. Thank you, Ananya. Rijul, please write the name of the school or college. We hope that you enjoyed the quiz. Congratulations to all three of you. Are you from Navy Children's School? Rijul and Divyanshi? I think Rijul is from Arvachin and Devanshi is from Navy. No, sorry. Divyanshi, can you please write the name of the school again? The full name of the school. Are you also from Arvachin School, Vivek? Okay. Okay, congratulations everyone. Congratulations to you all. We hope that you enjoyed the quiz. And thank you, Anita ma'am. Thank you so much. What a Thank you, wonderful Snigdha. quiz. Thank you. Thank you very much. Quiz. Thank you so much. Yes, Divyanshi, the top three, Ananya, Rijul, and Divyanshi, you will be given an e-certificate. We will be sending you an email to your school. Thank you for attending the webinar and the quiz. We hope that you enjoyed and learned a lot about groundwater today. Yeah, I think And we Snigdha, they're asking how certificates will be sent. Huh? They're asking whether it will be sent by email or will it be sent physically. I think you should just clarify that. Yes, it will be sent to your school email ID. We will send it shortly. I hope you all understood. The certificates will be emailed to your school email IDs. So, and Snigdha, maybe you want to just post your email ID there in case anybody has questions, they can just write to you. Yeah. So that's, if you have any questions about your certificate, please drop an email to delhiwetlands@gmail.com. It's in the chat box. So, and they'll be happy to answer your doubts or questions. Thank you, everyone. Thank you, Anita. Thank you so much. We would love to work with you in the next webinars and seminars. Thank you so much. Thank you so much. And
You all can leave. Thank you. We'll see you in the next session.